Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Biology Tutorials. Today we will going to study the next part of the chapter number 2, that is pollination. This is very interesting topic, and a few questions may come in the CBSE board from this topic. In this chapter we will going to study that what is pollination, its basic definition, what are the different types of pollinations, and what are the different agencies through which the pollinations occur. So let's begin. Pollination is nothing but the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the flower. The picture depicts the process of the pollination, and here the this insect or this bee will act as an agent of pollination. There are different types of pollination. First is the self-pollination, and another one is the cross-pollination, which is also known as xenogamy. These self and cross-pollination is further divided into different types. The self-pollination is divided into two types, that is autogamy and geitonogamy, whereas the cross-pollination or the xenogamy, it will occur by the various biotic and abiotic agencies. We will now, in the next slide, we will going to study the different types of pollination in detail. So we will first take the self-pollination. Self, as the name suggests, self means on its own without the help of any external factor. So it is a type of pollination in which a perfect flower is pollinated by its own. What do you mean by perfect flower? Perfect flower is the flower with having the male reproductive part and the female reproductive part. तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जिसके अंदर पॉलिनेशन होगा खुद ब खुद without any use of external factor. It is of two types we have already discussed, that is autogamy and geitonogamy. So what is autogamy? Autogamy is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of either the same और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. एक प्लांट के एक ही फ्लावर में हो सकता है. इट इज द जब एक ही प्लांट के सेम प्लांट है, सेम प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जब पॉलिनेशन एक सिंगल प्लांट के एक ही फ्लावर में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी. और वो और सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब वो किस टाइप का फ्लावर है? इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग द बोथ male reproductive organs and the female reproductive organs. Okay, so this picture depicting the process of the self pollination. यहाँ से इस फ्लावर के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है. यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे and it will reach to the stigma of the same flower, and by this the pollination, the autogamy, it will occur. The autogamy will occur by the three methods. The first is the homogamy. Homogamy means what? When the maturation of the reproductive structure, that is a male reproductive structure and the female reproductive structure, it will occur at the same time. अब अगर ऐसा हो कि एंथर्स जो हैं वो लेट मेच्योर हो रहे हैं, लेकिन जो स्टिग्मा है जो पॉलन को रिसीव करेगा वो पहले ही मेच्योर हो चुका है एंथर्स के मेच्योर होने से पहले, तो क्या ऑटोगैमी होगी? नहीं होगी. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू it is very necessary that the maturation of the reproductive structure, both the male and the female reproductive structure, will occur at the same time to make the autogamy happens. The next method through which the autogamy occurs is the cleistogamy. See, there are two types of flowers. One is the cleistogamous flower, one is the chasmogamous gamous flower. The cleistogamous flower are the flower which remain closed. Okay, example oxalis and balsam. मतलब
ऐसे फ्लावर्स जिनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लोज होते हैं. अब अगर क्लोज होंगे so there is a very very less chance or basically no chance of the cross pollination. बिकॉज अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज होगा, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो पेटल्स के अंदर क्लोज होंगे, तो देर इज नो चांस ऑफ द रिलीज ऑफ द pollen grains outside the flower. Okay, but in the case of the chesmoglamus flower, the reproductive structures are exposed. ओके, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, जिससे कि सेल मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. सो in the cluster, so the next method through which the autogamy occur is the clusterogamy, in which the reproductive structures of the flower they remain closed inside the petals to increase the autogamy. Okay, the next is the bud pollination. The bud pollination is this, in which the anther and the stigma they will ripen before the opening of the bud. Okay, example is the pea and the wheat. The next type of self-pollination is the geitonogamy. What is geitonogamy? It is the transfer of the pollen grains from anther to the stigma of the flower belonging to, see this is very important, belonging to either same or genetically similar individual. और सॉरी, इस यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ ऑटोगैमी नहीं है. ऑटोगैमी में इट इज द सेम फ्लावर, नॉट जेनेटिकली सिमिलर, इट इज द सेम फ्लावर. अब यहाँ पे क्या है, इट विल द गीटनोगैमी कहाँ होगा, गीटनोगैमी विल अकर. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसमें, अगर एक फ्लावर है, एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अगर उसके एक ही फ्लावर में होगा तो दैट इज नोन एज ऑटोगैमी. लेकिन अगर उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होगा, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, तो दैट इज नोन एज गीटनोगैमी. यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है, एक ही प्लांट है. ओके, एक ही प्लांट है, तो एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं. ओके, तो वहां पे जब एक प्लांट के फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गीटनोगैमी. यहाँ पे आप ये चीज याद रखिए, ईदर सेम और सिमिलर प्लांट, और यहाँ पे क्या है, सेम और सिमिलर फ्लावर. यहाँ पे फ्लावर जो है वो सेम है, यहाँ पे क्या सेम है, प्लांट सेम है, प्लांट. ओके, सो next is, what is the significance of pollination? See, it will helps to maintain the parental character and the purity of the race. कि एक ही फ्लावर के कैरेक्टर उसी की प्रोजेनी में जा रहे हैं, तो there will be no mixing of character, the purity of the race will be maintained. The second is, the flowers need not produce the large number of pollen grains. क्यों? क्योंकि उस पोलन ग्रेन्स को कहीं और तो जाना नहीं है, किसी और प्लांट पे तो जाना नहीं है, तो अगर फ्लावर जो है वो कम पोलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, so it will not be a problem. The flower need not produce the large number of pollen grains. Next is, the flowers need not develop a special device for attracting the agents of pollination. See, अगर अभी हम आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ अ स्पेशल डिवाइस फॉर अट्रैक्टिंग द एजेंट्स. की ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल डिवाइस होने चाहिए फ्लावर के पास ताकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके कि पॉलिनेशन करवाएं. सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस. ओके, सी देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अभी हमने पहले बताया कि प्योरिटी ऑफ रेस जो है वो मेंटेन रहेगी. इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट जो है, इट इज द डिसएडवांटेज इज इम्यूनिटी टू द डिजीज डिक्रीजेस.
वेरिएशंस नहीं, वेरिएशंस होंगी ही नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी जो है वो प्लांट की वो डिक्रीज होती जाएगी, जो उसका विगर है, ठीक है, यील्ड जो है वो कम होती जाएगी, और एडेप्टेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस. So these are the few disadvantages of the self pollination. Now we come on to the cross pollination. What is cross pollination? The cross pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of what? Of genetically different flower. वहां पे चीजें याद रखिए आप. सेल्फ पॉलिनेशन में it occurs on its own, same flower or genetically similar flower of either, okay, of the same plant, either the same flower or the different flower of the same plant. Here it is genetically different flower, तो flower जो है वो genetically different होना चाहिए. This process is also known as allogamy or xenogamy. करेक्ट है. सो दीज क्रॉस पॉलिनेशन, अभी हमने बताया कि डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए, और वो डिफरेंट प्लांट्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर है अगर, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट प्लांट पे होगा, सेम प्लांट पे तो होगा नहीं. तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने के लिए पोलन ग्रेन्स को, द पोलन ग्रेन्स नीड एन एजेंसी so that the pollen grains can be transferred from one plant to the another plant. So there are basically the two types of factors which help in the cross pollination. There are abiotic factors and there are biotic factors. Abiotic factors are wind and water. The process through which the pollen grains, they are transferred with the help of wind, they are known as, the process is known as anemophily. And in the water, through the water, when the pollen grains are transferred through the water, they are known as hydrophily. And another is the various biotic factors. There are various biotic factors like insects. अगर insects के through pollination होता है, that is known as entomophily. See, these terms are very very important. This could be come in your NEET exams. Okay, so this learn it very carefully. Through the insects is known as entomophily. Through the birds is known as ornithophily. Through the bats is known as chiroptophily. And when the pollination occurs through the snails, it is known as melcophily. Clear? You can write it down. So we will discuss these two types of factors. What are the basically what are the characteristics of the flower which are pollinated through these agencies? We will discuss it one by one. First is we will take abiotic factor, that is anemophily, when the pollination occur through the wind. See, these are the few characteristic. अगर आप ये रटने की जरूरत नहीं है, समझिए, अगर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन को मूव होना है तो पोलन ग्रेन्स जो हैं इट शुड बी लाइट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए एंड डस्टी होना चाहिए, कि धूल की तरह, कि जो हवा की जो विंड के करंट्स हैं उसके साथ साथ जो है वो फ्लो हो सके. ओके, अब फ्लावर्स की अगर बात करें तो जो फ्लावर्स हैं in the anemophily, the flowers will be the small, colorless, odorless and nectarless. Okay, and the flower has the numerous stamens that will produce a large number of the pollen grains. Both the stigma and the anthers are exerted. Stigma and are usually hairy and branched. Stigma जो है वो hairy होना चाहिए और branched होना चाहिए. It is highly, so this type of pollination is highly wasteful because it is undirectional. वो उसका कोई direction ही नहीं है, हवा के करंट से वो जिधर भी जाएगा वो वहीं पे वो pollen grain जो है कहीं पे भी release कर देगा. तो it is basically highly wasteful. Example is corn and maize. The second is hydrophily. Hydrophily means when the pollination occur by the
through the water current. So the flowers which through which the pollination occurs, the flowers are small, nectarless and odorless. The pollen grains should be light and unwettable. मतलब वो ऐसा नहीं है कि पानी के साथ गीले हो जाएंगे, क्योंकि obviously अगर पानी के साथ गीले हो जाएंगे तो what is the use of moving of the pollen grains? The stigma should be long and sticky. There are basically two types of hydrophily, that is epihydrophily and hypohydrophily. Hypo means होता है below, means, or hydro means water. Hypohydrophily means it is the type of hydrophily which occurs in the plant like Zoostera, which occurs in the plant like Zoostera. It will occur below the surface of the water. ठीक है, पानी के सरफेस में है, उनके पानी के सरफेस के नीचे प्रेजेंट हो, नीचे पॉलिनेशन होगा. एंड द पोलन ग्रेन्स दे आर विदाउट द एक्साइन. Whereas epihydrophily is what, where the pollination occurs above the water surface. Example is Vallisneria. Okay, so these are two abiotic factor, that is anemophily and the hydrophily. Okay, next we will discuss the various biotic factors. The biotic factor first is entomophily, where the pollination occur through the insects. So here are the some characteristics of the flowers through which will pollinate by the insects. So flowers are colored. तो अब जो बायोटिक लाइक बटरफ्लाई, इसमें एंटोमोलॉजी में कौन कौन से इंसेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स, हनी बीज एटसेट्रा. ओके, तो जो फ्लावर्स हैं दे शुड बी कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. अब ऐसे फ्लावर्स जो बिल्कुल डल हैं वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो द फ्लावर्स शुड बी कलर्ड. Like butterfly always visit the reddish flowers. Bees are always attracted towards the blue, purple, violet and yellow flowers. And the flower should have the landing platform so that it will be easier for the insects to reach to them and to easily suck the nectar. And very important point, the flower should produce the odor and the nectar. अभी जो हमने एबायोटिक फैक्टर्स को स्टडी किया था, वहां पे हमने देखा था कि जो फ्लावर्स हैं वो नीड नॉट टू बी कलर्ड, मतलब द फ्लावर्स वर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस. बट हेयर इट इज ऑपोजिट, कि अगर कोई एजेंट बायोटिक एजेंसीज आ रही हैं पॉलिनेशन के लिए, तो वो आएंगी क्यों, पॉलिनेशन क्यों करेंगी, उनको भी तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल इंटरैक्शन ना, कि अगर वो पॉलिनेशन करवा रही हैं तो इन रिटर्न दे विल गेट समथिंग. So here the insects, they will receive the nectar from the flower and in return they will help in the transfer of the pollen grains. The pollens are usually heavy, sticky and few in number. The pollens should be sticky. Sticky क्यों? जैसे ही when जो insects है, whether it is butterfly, bees or honey bee, whenever they will sit on the flower, okay, the pollen grains are sticky. They will stick to their legs of the insects, and whenever these insects, they will fly and land onto the another flower for the nectar collection. These pollen grains, they are received by the other flower. Examples are jasmine and rafflesia. Next is the ornithophily. It is the pollination which occurs by the birds. So there are a few characters. The flower should be have, ठीक कर लेना, यहाँ पे आएगा, flower have edible parts which secrete abundant watery nectar. Okay, they will have the abundant watery nectar. The flowers are brightly colored, orange, red and yellow and blue. The corolla is funnel shaped. The corolla means the petals जो है, they are funnel shaped so that it will be easier for the birds. Okay, because birds जो है वो
सिट नहीं करती हैं, वो होवर करके और फिर नेक्टर सक करती हैं. The flower is odorless. Usually the flower plants are commonly leathery. Example is bombex, agave and bottle brush. Next is the caryophyly. Caryophyly means when the pollination occurs by the bats. So flowers in the caryophyly that are large, stout and dull in color. Okay, and they have a strong fruity smell. This is very important. They have a strong fruity smell, and they have abundant nectar and pollen grains. Example is Anthocephalus, that is the kadam tree. So one thing which is very common in all the biotech factors is that the flower should produce odor and nectar. Okay. So here are some significance of the cross pollination, that it introduces the variation in the progeny and it will increase the organism adaptability to the environment. The defective character are eliminated and replaced by the better character, and the progeny will have better characters than the parents. So if the questions come, explain the process of pollination, you need to write what is pollination and draw a flow chart of the different types of pollination, which I have shown in the slide number 3. Okay, and then explain these all types of these different types of pollination in according to the marks, and please write down the significance of both cross pollination and the self pollination. Okay, with this we have completed the different types of pollination. Okay, if you have any questions regarding this, please write it in the comment box. And in the next slide, or in the next upcoming video, we will be discussing the different. We will be discussing what is left, that is fertilization in the in flowering plants, and its post fertilization events. Okay, so I think two or three I think one or two videos more for this chapter, then we will start the next chapter. Thank you very much. Goodbye.